Hey, hello, how you doing? कैसे हैं सब लोग? आवाज साफ आ रही है? You able to hear me? You should be able to see me just about now. Yeah. कैसे हैं आप लोग? How what's happening? So, how was the first stereo session? Do you guys have fun? I know some of you may have watched it not live, but that's cool. The more the merrier, no? Hey, good evening, Deepanvita. Hey, Naruto. Good to be back. Yeah. कहाँ थे आप, Naruto जी? So, let's start off right away. There was a homework question that you guys answered. Thank you for that. Yeah. Specifically, Mayuk and Deepanvita. You guys gave me answers, so thank you for that. Hey, good evening, Asya. What's up, Deepu? Asya, I haven't seen you around in a while. Good to see you, Deepu. You've been around. That's great. That's great. Good to see everybody here. Okay, so पहला सवाल, last question, last session का एक सवाल. Which of the following compounds will exhibit geometrical isomerism? हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, geometrical isomerism. आज हम लोग देखेंगे optical activity को. We'll get there just in a second. But which of these do you think will exhibit geometrical isomerism? Give me answers right away. All right, Biswajit, what's up? Hi, good to see you here. Hey, Hazim Makbul, hello. इस सवाल का आंसर क्या होगा? I'll draw the structures for you if that helps. 1,1 diphenyl prop 1 ene को मैंने यहाँ पे दिखाया है. This is carbon 1, carbon 2, carbon 3. और phenyl को I've just written this group basically. This group मैंने इसको abbreviate कर दिया है to be phenyl. ठीक है? तो इसका मैं अगला वाला बताऊं तो 3 phenyl pent 1 ene. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 3 phenyl pent 1 ene. Okay. और फिर 2 phenyl pent 1 ene. फिर से वही 1, 2, 3, 4, 5. Okay. लास्ट वाला 1 phenyl pent 1 ene. Okay. So इन चारों में से which one will exhibit geometrical isomerism? What's up? Suraya Zaman is saying C. Abhishek Yadav, hello, how you doing? Deepanvita ने comments में भी D बोला था, यहाँ फिर से D बोल रही हैं. She is quite sure it's D. Asya also saying D. Now, what's the goal here, right? If you have the same, substance, the same substituent on one side of the double bond, then it will not show geometrical isomerism. In this case, ध्यान से देखो इसको. See here, not gonna show because दोनों phenyl groups हैं. इधर भी not gonna show because यहाँ दोनों H के groups हैं, right? What about this? Same कहानी. H, hence नहीं दिखाएगा. The only one that will show is this chap right here. देखो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ तो अलग अलग हैं. इस तरफ H हो गया और एक C2H5 ग्रुप है, और इस तरफ हो गया H और दूसरा तो अलग ही ग्रुप है. तो सिर्फ D दिखाएगा. Yeah, good job. While I was explaining that, Deepu, Tanu, hey, what's up, Anish? I'm good. How you doing? Shalini, hi, what's up? विश्वजीत जी, हम लोग तो दोनों चीज करेंगे. वील ट्राई आवर बेस्ट टू डू दोनों, बट मेरा मेन फोकस इंग्लिश पे रहेगा. मैं पूरा सेशन हिंदी में नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इतनी अच्छी हिंदी मुझे आती नहीं है, तो मिक्स ही होगा. ठीक है अभिषेक, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हम लोग एक टाइम टेबल आपको देंगे. मेरा टाइम स्पेसिफिकली आई कैन राइट दैट डाउन वेरी क्विकली. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. आई टेल यू व्हेन आई एम गोइंग टू बी ऑन. देयर वाज एन इमेज आई हैड. वेट, होल्ड ऑन. I am going to be here at 6 p.m. today, which is आज कौन सा दिन है? आज Thursday. Then on Saturday we have what 7 and 8:15. I think it's 7:15 and 8:30. That's me. I know ये बहुत rudimentary है. You'll get a proper timetable from these guys soon, हाँ. और Friday को, by the way, कल हम लोग एक बहुत interesting session कर रहे हैं, PYQ session. That's going to be at 8:30 p.m. Every day at 8:30 for half an hour we're doing that. And on Tuesday I'm going to be here at 6 and 7:15. That's my time slot. If you want to know all the teachers' time slot, it's going to be basically Monday through Saturday. ठीक है, मोस्टली शाम को होगा. अभिषेक जी लेंगे 3 बजे. Thanks for asking that question. Yeah, I was supposed to tell you guys that, but good that you brought that up right now. Hey, Dr. Vikas ji, what's up? All right, cool. Previous session की छोटी समरी कर देते हैं. यहाँ पे what did we look at? We said that okay, stability of isomers is the first thing, and that had to do with steric hindrance. And then we said dipole moment is related to boiling point and is related to solubility, or a melting point is different, right? This is very different. This has to do with packing, है ना? तो एक क्विकली मैं उसको रिवाइज करता हूँ. लास्ट सेशन में क्या किया था? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस. अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेबिलिटी नहीं होगी. एंड लुक एट दिस. ये डाइपोल मोमेंट का एक आइडिया क्या था कि सिस आइसोमर में डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी नॉन जीरो, क्योंकि ये दोनों एड अप होके यहाँ पे हो जाएगा. ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे सब वाले. रेजोल्यूशन वेक्टर वो सब मैंने ऊपर से बताया था आप लोगों को. बॉइलिंग पॉइंट, दैट वाज ट्रांस आइसोमर हैज no dipole moment and the other one does, cis does. Now boiling point,
अगर डाइपोल मोमेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, राइट? अगर एंड मेल्टिंग पॉइंट का क्या आइडिया था? एग्जैक्टली उल्टा, वेल नॉट रियली उल्टा, इट हैपेंस टू बी कि उल्टा है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग एंड ऑन सिमेट्री। सिमेट्री की बात हम लोग इस सेशन में डिटेल में करेंगे, ठीक है? जनरली द ट्रांस आइसोमर हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर, क्योंकि इट्स मोर स्टेबल। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज देखेंगे डिटेल में। सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एंड अगर पानी की बात कर रहे हैं यानी कि वाटर, दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है? और अगर यहां पे डाइपोल मोमेंट होगा तो इट्स गोइंग टू डिसॉल्व, अदरवाइज नॉट। सो सिस आइसोमर डिसॉल्व होगा, दूसरा नहीं होगा। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स अप मयूक? हे और कोई है? क्लास 11 नीट का टाइम क्या है? अभिषेक, वी विल कीप स्वैपिंग इट अप। आई डू 1 11th एंड 1 12th, राइट? सो ये वाली क्लास 12th की है तो अगली वाली 11वीं की होगी। I do 5 sessions a week right now for 11th and 12th together, and the 6th session is a PYQ session. You asking very interesting questions. बहुत सही सवाल है. Keep checking the Telegram channel. I think that's the best way to get latest updates. You have the link in the description. We'll get everything to you. ठीक है? All right, cool. Let's start. Let's start with today's session. Which of these has a higher melting point? Your jaws are back. What do you call them? Crocodile jaws, right? So out of these two, in दोनों में से which one's going to have a higher melting point? Is it going to be this guy or this guy? This one or this one? Please comments में डालिए. Yeah. What do you think? Higher melting point किसका होगा? Is this continuation of last session only? कोई fancy चीज नहीं है. But yeah, let's just start. Okay, Mayuk is saying this guy. ये वाला. Mayuk is saying this. Deepanvita is saying this as well. Medha and Naruto and Tanu. Everybody. 5 of you guys have told me this one, so it must be this one. Arav, good to see you. Arav also saying this. Deepu also is saying this. Chalo, consensus ho gaya. Good job. Why? Because this has better packing. And this is a trans isomer. All right, let's go to the next one. Does this molecule possess zero dipole moment? Yes or no? Does this molecule possess zero dipole moment? Y or N? Apur, good job. Not Apur. Anish, right? You used 2 different IDs. Anish, yeah. Biswajit, good job. Yes, you're all right on the last one. Okay. No. Everyone's saying no. Beautiful. No, of course not. क्योंकि देखिए, it's going to have a dipole moment in this direction. ये ऊपर वाला तो cancel out हो जाएगा, but इस direction में होगा dipole moment. Okay, awesome. Good job. What about this one? इन दोनों में से which one is going to have a higher boiling point? Organic में मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है. Yeah. Biswajit, Tanya, Vikas ji, Arav, Shalini, Asya, Deepanvita, Naruto, Medha, and Deepu and Mayuk. Everybody got that right. Wow, man. You guys are geniuses at organic. This is beautiful. All right. What about this one? Which one has a higher boiling point? इसमें क्या होगा? अरे क्या हुआ? चैट बहुत शांत हो गई. अब सोचो, यहां पे सिस कौन सा है, यहां पे ट्रांस कौन सा है? ये सोचने की बस बात है. ठीक है? अगर थोड़ी हेल्प चाहिए तो लेट मी ड्रॉ दिस गाय हियर. मे बी दैट विल हेल्प. देखो, इस तरफ एच ड्रॉ कर देते हैं, इस तरफ एच ड्रॉ कर देते हैं. अब हो गया आसान. अगर लाइन डायग्राम ऐसा है, अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है, जस्ट ड्रॉ दी एच एंड देन यू नो फॉर श्योर. अच्छा, अगर एच सेम साइड पे हो गया जी तो सिस हो गया, अगर एच दूसरे ऑपोजिट साइड पे हो गया तो ट्रांस हो गया. ठीक है, कूल. सो सिस ट्रांस अगर हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया, तो कौन सा होगा? अच्छा, तो सिस विल हैव a higher boiling point. एक मिनट, cis will have a higher boiling point. मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ लोग आप लोग क्या बोल रहे हो. Okay, Mayuk is saying this and Apur and Anish is saying B. Okay, Tanu is saying first. First will have a higher boiling point, and then Medha is saying first too. Deepu is saying first as well. Arav is saying the other way around. Mayuk is again saying second, and Tanu फिर से बोल रही है first. Wow, looks like there is some, there is no consensus. थोड़ा सा भिड़ाव हो रहा है with the jaws, the crocodile jaws. Do you guys agree? Cis और trans में समझ में आ रहा है? Cis और trans में समझ में आ रहा है? I don't understand. S अगर 3 होगा तो क्या होगा? What do you mean by S अगर 3 होगा? आपकी बात मैं समझा नहीं. Did you guys follow what is cis, what is trans? तो अगर cis और trans में है, तो clearly dipole moment is going to be higher in this case as compared to this case. I understand कि ये similar नहीं है, right? This is just a CH3 and this is maybe what? 1, 2, 3. So this is C3H7 or whatever, right? So इसका dipole moment जो भी direction में होगा, this is going to have a higher dipole moment, right? Cis. अगर higher mu है, तो this should have a higher boiling point, है ना? मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझा रहा हूँ, right? Because there was some disconnect there.
It looked like a lot of you wanted to say that it's this guy who's better. But you see, right, why it is the cis isomer. Let me just put a green mark over here so that it's clear. ये वाला हमारा बंधु, this is the guy that has a, yeah, okay, cool. 3 बॉन्ड हो ही नहीं सकता ना, डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड हो जाएंगे विश्वजीत. वी आर डूइंग थिंग्स विद सिस एंड ट्रांस. मे बी यू मिस द फर्स्ट क्लास. अब एक बार पहली क्लास फिर से एक बार देख लीजिएगा विश्वजीत जी. यू विल अंडरस्टैंड कि द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म राइट नाउ एट दिस पॉइंट हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड की बात करें, यानी कि प्लेनर मॉलिक्यूल्स की. सो इट कांट रियली हैव 3H ना. या ओके कूल. नाउ व्हिच वन हैज हायर सॉल्युबिलिटी? फर्स्ट. ओके फर्स्ट मतलब कि दिस वे, राइट? ओके. Tanu is saying this, Deepanvita is saying this, Deepu is also saying this, Medha, Asya, Tanu. Okay, अच्छा. Higher solubility. अब देखो higher solubility क्यों होगी? तनु changed her answer. तनु changed her answer to second. अच्छा ठीक है. तनु ये वाला, अरे यार तनु मुझे लग रहा है आप सही बोल रही थी. अच्छा नहीं, पक्का पक्का फर्स्ट या सेकंड? ऑलराइट. अरे भाई मैं फर्स्ट सेकंड बोलूं, इसमें क्या इंग्लिश बोलूं? क्या पहला दूसरा बोलूं? कम ऑन गाइस. सी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक एवरीथिंग एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इफ यू गिव मी समथिंग जेनरिक लाइक इंग्लिश बोलो, इससे बेहतर है मुझे ये बताओ क्या समझ नहीं व्हाट आर यू नॉट एबल टू फॉलो. या आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर इफ यू डू दैट. अ जेनरिक स्टेटमेंट may not help you. Which part do you want me to repeat? All right. Second is cis. अभी बहुत लोग second बोल रहे हैं. Arav is the only guy saying first. Arav is only guy saying first. अच्छा ठीक है, देखते हैं. ये वाला है ट्रांस, ये वाला है सिस, है ना? तो अगर ये वाला सिस है तो मुझे तो लग रहा है कि इसका म्यू विल बी नॉन जीरो, राइट? इसका भी नॉन जीरो ही होगा. इंटरेस्टिंगली दिस ऑल्सो गोइंग टू बी नॉन जीरो, but this mu is definitely going to be greater than this guy. Okay, cool. नहीं मयूख, in this case interestingly मयूख, वो ट्रांस नो डाइपोल मोमेंट तभी होगा अगर ये दोनों सेम एलिमेंट्स होते. अगर दोनों तरफ CH3 होता then what you're saying would be correct. Okay, but इधर भी mu not equal to zero, but इधर mu is going to be much greater than this. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो प्लीज डोंट मग कि ट्रांस मतलब भाई नो डाइपोल मोमेंट. दैट ओनली हैपेंस अगर दोनों ग्रुप सेम है, बट यहाँ दोनों ग्रुप सेम नहीं है. Thank you for pointing that out, by the way. So the answer is this. चलो, it's okay to have some sort of क्या बोलते हैं इसको, आगे पीछे थोड़ा चलता है. No problem. We good? Yeah. Exactly. Good job, Anish. Anish is absolutely right. Did you guys follow what Anish said? Yeah. Anish जी ने बोला अगर सेम है, मतलब कि देखो अगर ये COH नहीं होता, अगर ये CH3 होता, तब इस केस में जीरो हो जाता. If this guy would be, if this was CH3. खैर इसको मैं हटा देता हूं ताकि अगर बाद में कोई नोट चाहिए तो कंफ्यूज ना हो जाए बेचारा. ठीक है, cool. Let's move on to the next one, which is this session. We're going to talk about optical isomers right now. What are optical isomers? Optical मतलब देखने वाली चीजें. Well, a little bit. It has something to do with light. Exactly क्या चीज मैं आपको बताता हूं. यहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से देखिए. Are you able to see that these two molecules are different? It may look like they are the same. एक सेकेंड, ये भाई साहब बैठ रहे हैं. Just give me, there you go. अरे एनिमेशन बिल्कुल बहुत अजीब सा हो गया था. Okay, you see that these molecules are different. They are not the same. They may look like they are the same, but ध्यान से देखिए. There's something different about them, similar to the hands that hold them. Yeah, क्या अलग है समझ में आ रहा है? Wow, rotation, direction, and साहिल on fire. पहला कमेंट आज का इतना तीर की तरह उसने सीधे मजे की बात बोल दी. ओके, मेधा इज राइट, साहिल इज राइट, मयूक इज आल्सो राइट. मिरर इमेज. ओके, गुड. Stereoisomers that have different behavior towards plane polarized light. अब ये क्या बना है? What is plane polarized light? अब सोचो. Tell me one thing. What do you guys think plane polarized light? Is this a weird concept? Plane polarized light. ये क्या चीज है, कुछ मालूम है? Let's take everything away. Let's remove all the noise. What is plane polarized light? मेरी तरफ दो लाइट्स हैं, ठीक है, मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है. Is this plane polarized light? Is this just light? इन दोनों में क्या फर्क है? Do you guys know? और अगर कोई गेस करना चाहे तो गेस कर दो, गेस भी कर दो, that's also fine. Either way works. What do you think? Don't worry, कहीं गया नहीं, स्लाइड यहीं पे है. But क्या है ये? What light is this on me right now? Any idea?
कोई गेस करना चाहेगा? अगर नहीं देखा है तो इट्स ओके, राइट? Regularly, the light that you have is basically an electromagnetic radiation. Now, what is electromagnetic radiation? ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लोअर ग्रेड्स में, और अभी रिसेंटली भी पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि उसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, एंड दे ऑसिलेट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, बहुत अच्छे अच्छे कलर है तो यूज ही कर लेते हैं, इन डिफरेंट प्लेन्स, okay, perpendicular to each other, and both of these are perpendicular to the plane of propagation of light. कौन सा तीसरा कलर यूज करें? हरा वाला यूज करते हैं। लाइट अगर जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो मेरे पास दो परपेंडिकुलर चीजें हैं। खैर डोंट वरी, हम लोग फिजिक्स नहीं कर रहे हैं, इतने डिटेल में नहीं कर रहे हैं। मैं अगर नॉर्मल लाइट यानी कि उस लाइट को आई पास इट थ्रू अ निकोल प्रिज्म, तब ये जो ऑसिलेशंस हो रहे थे ना, बहुत फंकी वेज में इधर उधर हो रहे थे, देन आई फोकस दैट एंड आई गेट इट इनटू जस्ट वन प्लेन, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई नो ये थोड़ी भारी चीजें हैं, एंड ट्रस्ट मी, इफ एंड व्हेन यू गाइज गेट इनटू रिसर्च, ये डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम वी कैन जस्ट गिव यू अ स्मॉल लिटिल illustration as to how this works. Okay, ये हम लोग 3D चीज को 2D में दिखा रहे हैं। सो वी आर सेइंग दैट ओके, अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल लाइट जो मेरे चेहरे पे आ रही है, ये ऐसे है, ये हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, इट इज 3 डायमेंशनल, हम लोग इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं 2 डायमेंशनल, ठीक है। व्हेन दिस पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म इट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड, व्हिच मींस कि ऑसिलेशन सिर्फ इस प्लेन में हो रहे हैं। अब हो सकता है कि आई कैन यूज सच अ निकोल प्रिज्म कि इस डायरेक्शन में भी हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई यूज द निकोल प्रिज्म। आई विल जस्ट लुक एट द कमेंट्स एक बार। लाइट फॉलिंग ऑन स्पेसिफिक प्लेन, ठीक है मयूक, गुड गेस। लाइट फॉलिंग ऑन स्पेसिफिक प्लेन को मैं थोड़ा रिफाइन करके बोलना चाहूंगा कि लाइट व्हेन यू पास इट थ्रू निकोल प्रिज्म, the electromagnetic radiation, that oscillation happens in one plane. Okay, I hope that makes it better. थोड़ा abstract idea तो है। I'll tell you the main thing that you need to know to be able to figure out कि हमसे इसका मतलब कैसे निकालें इस चीज का, what do we do with all this, ठीक है। There is some instrument that measures the degree to which a compound rotates the plane of polarized light, ठीक है। हमने कुछ खिलवाड़ किया, somehow we have got something called plane polarized light, and that has this sort of a thing, मतलब it has this oscillations in this plane, वो उसमें लिखा था। Now I have this thing called a polarimeter. Okay, it's a tube. This whole thing is called a polarimeter. Okay, और इस ट्यूब के अंदर मेरा सैंपल है, यूजली अ गैस, एंड लाइट, पानी नहीं, लाइट आ रही है इधर से अंदर, ठीक है, इस डायरेक्शन में अंदर जा रही है। नाउ बिकॉज ऑफ माई सब्सटेंस आई यूज अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसका लेंथ भी स्पेसिफाई होता है, ये सब चीजें हैं, अगर बुक्स में पढ़नी यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन की एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं, but it tends to rotate light. Rotate मतलब it can rotate both ways, either this way or that way. Now this way that way ज्यादा बेहतर हम लोग करेंगे clockwise या तो counter clockwise. Clockwise मतलब घड़ी की तरह, right, left to right. Counter clockwise मतलब right to left. Counter anti दोनों सेम चीज है, ठीक है। So far so good. Studies in which law in physics? Sorry मैं समझा नहीं कौन सा law. विकास जी आप समझ पा रहे हैं? इतनी हिंदी ठीक है? Are you okay? And my other friend Biswas, are you all right? Are you able to understand what I'm saying? तो मैं यहां से इस तरफ से देख रहा हूं, ठीक है, and I see that okay, it was supposed to be here, but थोड़ा सा इस तरफ चला गया है, okay, negative, positive and all of that, यहां पे कुछ लिखा है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या है। okay, good, great विकास जी, all right Mayuk, good. Now it is possible कि दूसरे डायरेक्शन में भी हो जाए। देखो इसमें था क्या, दूसरा कलर यूज करता हूं, in this compound moved it to that other side. There is some other sample. This is sample 1. This is sample 2. Let's call it sample 2. ये दूसरे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये ऑब्जर्वर देख रहा है। So depending on where it rotates and by what angle, I can give it some sort of, I can give it more character, so to speak. मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ कि अच्छा ये वही कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इतना इस तरफ रोटेट करता है। Now, why is that important? I'll talk about it in just a second. So think of this as refining your naming. Naming मतलब nomenclature का आइडिया था।
नॉमेनक्लेचर से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा माय एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कंपाउंड। मैं नॉमेनक्लेचर इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि नॉमेनक्लेचर तो आप by looking at a compound you can decide what its nomenclature is, but ये आइडिया कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। बट ये एक्सपेरिमेंटल है, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। एक्सपेरिमेंट से हम लोग उसको परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई इट। ओके, सो इस चीज को हम लोग ऑप्टिकल बिहेवियर बोलते हैं, दिस एबिलिटी टू रोटेट दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इफ इट डज नॉट, then it's called, it's said to be optically inactive. If it does, then it's called optically active. As simple as that. ठीक है? Compounds that rotate the plane of polarized light in a characteristic way when passed through their solutions. Okay, cool. Gas solutions, both of things work. ठीक है? Oh yeah, you do this with solutions. My bad, मैंने पहले gas बोला था. Not in our syllabus, the gas stuff. Solutions. Cool. ठीक है? And if something does not rotate in the plane of polarized light, then nothing happens. Does not rotate मतलब जैसा था वैसा ही लाइट निकली. That's it. I see some comments going on. Dextro and levo rotatory. Shalini on fire. Does not want to wait. बहुत धीरे चल रही है. We'll speed it up. But good job. I really like that you know this already. Dextro मतलब right. Levo यानी कि left. What Shalini said is exactly what we're going to do next. So based on direction of optical rotation, we can categorize into two types. Great job. Dextro and levo rotatory. Dextro मतलब right. I know मेरा हाथ मुझे लेफ्ट में, आपको लेफ्ट में दिख रहा है, तो I want to say right here, but that'll confuse you even more. Let's just say dextro means right. ठीक है? यानी कि clockwise, और this means left, यानी कि counter clockwise. ठीक है? Every time I write CW, I mean clockwise. CW means counter clockwise. और ये D या प्लस सेम चीज है, L या माइनस भी सेम चीज है। अब ध्यान से ये सुनिए, ये D और L हमेशा छोटा ही लिखिए। I have seen students, boards में ये ज्यादा जरूरी है, नीट में I don't think इतने बाल की खाल उधेड़ी जाएगी, but in boards you're gonna get lose marks if you do things like this, right? Do not write capital D and capital L. उसका बिल्कुल ही अलग मीनिंग है, that has to do with sugars, specifically carbohydrates and all of that. वो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे, और आप लोग तो बायो स्टूडेंट, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं इसको कि ये कहां पे यूज होगा। तो this is different, you know, this thing and this thing are different. ठीक है? तो इसको अलग कलर से लिखा जाए, कुछ और हाईलाइट कर दूं ताकि ये अलग है। ठीक है? तो ऑलवेज राइट स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। ये क्या कैपिटल डी और कैपिटल है? इफ यू वांट टू नो, इट हैज अ सिमिलर कॉन्टोनेशन, बट कॉन्टेनेशन बड़ा शब्द हो गया, माय बैड। इसका ओरिजिन स्टोरी ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बने, ये फैंसी इंस्ट्रूमेंट्स बताने के लिए कि डी और एल क्या है, उससे पहले एक और तरीका था फिगर आउट करने का। उस तरीके के हिसाब से, द ओल्ड वे, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल बने थे, और अभी शुगर्स के लिए हम लोग बोलते हैं चलता है, इसी को यूज करते हैं। बट फॉर ऑल कंपाउंड्स द मोस्ट साइंटिफिक वे इज टू टॉक अबाउट स्मॉल डी या प्लस फॉर्म या एल या फिर माइनस फॉर्म। ओके, गुड जॉब। ठीक है? डेक्स्ट्रोरोटरी मीन इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड राइट मतलब इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी या प्लस। लीवो रोटरी यानी कि लेफ्ट, यानी कि छोटा एल या फिर नेगेटिव। दैट्स इट। कूल। नाउ these are experimental observations, बार-बार बोल रहा हूं, you cannot predict this by looking at the way the compound looks. इसलिए मैंने बोला this is a way to identify the compound, and this is different from nomenclature. Nomenclature हम लोग देखते हैं कि structure से बता देते हैं, ये experiment से बता देता है। Okay, so what causes this optical activity? क्यों होता है ये? For this there was awesome theory by two amazing scientists that are on your screen right now, Van 't Hoff ji and Lebel ji. What did they say? They said that okay, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, एंड दे वर क्वाइट राइट, कि एक कार्बन मॉलिक्यूल है और उसमें अगर चार अलग अलग सब्सटेंसेस, नॉट सब्सटेंस, स्पीशीज आर अटैच्ड टू इट, चार अलग अलग, और उसको हम लोग एक टेट्राहेड्रन बना देते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अरे चलो, कार्बन हो गया, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे और एक आगे। पीछे आगे, अरे ये तो मालूम है आपको ना, टेट्राहेड्रन बन रहा है। यू सीन दिस राइट? व्हाट इज अ टेट्राहेड्रन? ये फोर साइडेड फिगर, ये 3D फिगर है। अरे कहां गया ये? तो उल्टी तरफ चला गया। ठीक है? दिस इज इट। सो थिंक अबाउट अ ट्रायंगल एज अ बेस, और बाकी तीन फेसेस भी ट्रायंगल्स। टेट्राहेड्रन ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है। ठीक है? तो बीच में एक कार्बन हो गया और फिर चार अलग अलग ग्रुप हो गए। कौन से ग्रुप? R1, R2, R3, R4। मैंने लिखा है RX, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? If all of these four substituents are different, then the molecule lacks symmetry, and such a molecule is referred to an asymmetric molecule. ये दो जरूरी पार्ट है, lacks symmetry and it's referred to an asymmetric molecule. मतलब
ये जरूरी है फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। asymmetry, asymmetry is important for the molecule to be optically active. That's what the main takeaway is here. 104.5 degree, अरे वाह, tetrahedron. Okay, cool, sure, good job. छोटा सा सवाल देख लेते हैं, छोटा सा सवाल. The correct statement out of these four is, पुरानी चीजों से ही है. I told you right, I'm going to keep switching things up. हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं, फिर suddenly अरे ये वाला याद आया क्या? We're going to do that a lot. Being able to switch is good. The current statement is, better the packing of molecules, lower the melting point. D and L forms of a compound can be observed by directly looking at the structure of any molecule. देख के दृष्टि से हम लोग पता कर लेंगे. If the substance rotates plane polarized light to the left, then it's called dextrorotatory. इसको हम लोग मना कर देते हैं. ये तो नहीं आप मार्क करोगे, ठीक है? Not C, anything but C. Okay, everyone saying D. Good job. Naruto, Medha, Tanu, शालिनी, दीपू, मयूख, दीपान्विता, बिस्वजीत. मैं आपको बिस्वा बोल रहा था. I hope that's all right. Biswajit, Sahil, Arav, and Vikas ji. Everyone saying this. Awesome. Asymmetry is the molecule responsible for optical activity. Simple सा question था. एक और सवाल देखते हैं. Out of four of these compounds, which one will have the highest dipole moment? ये मजेदार सवाल है. This is a nice one. Yes, Medha, absolutely right. Levorotatory left side. मेरे से वो लीवोरोटेटरी की स्पेलिंग ना हमेशा गलत होती थी. लीवो को मैं हमेशा LEAV लिख देता था. बट मेधा इज डूइंग गुड जॉब ऑफ राइटिंग द राइट स्पेलिंग. इट इज दिस. यही सही है. खैर, इस सवाल का जवाब दीजिए. द कंपाउंड दैट हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आउट ऑफ दीज फोर इज, दो सिस हैं, दो ट्रांस हैं. तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट में हम लोग ट्रांस वाले तो शायद हटा ही सकते हैं. आई थिंक हटा सकते हैं. फिर भी हम लोग डायग्राम तो बना ही लेंगे, ठीक है. तो अभिनंदन इज सेइंग डी. ओके, अभिनंदन सेइंग डी. दीपान्विता सेइंग ए, तनु सेइंग ए, मयूख इज सेइंग ए, विकास जी सेइंग ए, बिस्वजीत इज आल्सो सेइंग ए, दीपू, शालिनी, वाह, बहुत लोग ए बोल रहे हैं. गुड जॉब. ओके, लुक्स लाइक मस्ट भी सही ही होगा. फिर नरूटो भी ए बोल रहे हैं. ओ दिबांकिता, व्हाट्स अप, गुड टू सी यू, इज आल्सो सेइंग ए 2 बार. हाँ, वही सही होगा. चलो, फिर भी for my friends who are watching this after it's live, चारों स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे. अब क्लियरली ट्रांस वाले को तो हम लोग हटा ही देते हैं. अभिनंदन, आई ओके कि ट्रांस क्यों नहीं होगा? बिकॉज ट्रांस में जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, इन दोनों का कुछ होगा, इन दोनों का कुछ होगा, दिस विल काइंड ऑफ कैंसिल आउट, ठीक है. इस केस में स्पेसिफिकली बिकॉज लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ये येलो मतलब कि सेम अमाउंट बट ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंड ग्रीन मतलब सेम अमाउंट ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. बट बाकी सिस वालों में इट विल एड अप. अब ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन. ओके, इसीलिए everybody has said that A is the right answer, and you're all good, you're brilliant, you're all absolutely right. Yes, thank you Medha, great work. All right, next सवाल देखा जाए. well, सवाल से पहले थोड़ा और थियरी कर लेते हैं. So what kind of molecule show optical activity? The main idea is that the compound which has a non-superimposable mirror image. मतलब मेरे हाथ का mirror image non-superimposable. ये तो superimpose हो गया. अरे superimpose हो गया क्या हाथ? हाँ, अब समझना. नहीं, superimpose कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना. क्या हो रहा है? What's up, Kakashi? Hatake, that's a interesting name. Are my hands superimposable or not? I'm confused. वही एक बात बताओ. My hands are mirror image of each other. Superimpose तो हो रहा है भाई. तो ये क्या हुआ? हो रहा है सुपरइम्पोज क्या? हाँ. नहीं, मेधा, चलो हाथ वाली बात बाद में करेंगे. दिस इज अ प्रीटी कूल थिंग, ठीक है. we'll talk about this hand thing later. Just a small hint, my hand is planar guys. Okay, my hand doesn't matter. Okay, it's planar. Look at this. I have a you know thing to like a bone to pick with that. कि जब लोग हाथ बोलते हैं सुपरइम्पोज, भाई हाथ इज प्लेनर, तुम्हारे मॉलिक्यूल आर नॉट प्लेनर. अगर तुम हाथ का एग्जांपल देके बार बार दिखाओगे ना मिरर के बारे में, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे लाइफ में. क्योंकि भाई ये तो एक के ऊपर होगा, आसानी से आ रहा है. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नाउ लुक एट दिस. हियर यू गॉट अ मिरर इमेज एंड दीज टू ऐसे नहीं आएंगे एक के ऊपर एक. क्यों? क्योंकि देखो, थिंक अबाउट इट लाइक दिस. इफ आई ट्राई एंड डू द सेम थिंग विद माय हैंड एज आई डिड टू दिस, ये OH और OH तो इधर आ जाएंगे, H पीछे इधर आ जाएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, इज इट? दे आर नॉट गोइंग टू बी सुपरइम्पोजेबल एट ऑल. यू सी दैट? Mayuk, Medha are saying no, that's good. Deepanvita.
These are non-superimposable mirror images. They are different compounds. आपको दिख रहा है ये, यही सेम वाला एग्जांपल था जब हम लोग रोटेट कर रहे थे, गोल गोल कर रहे थे. एक और एग्जांपल हियर, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यानी कि देखो ये F पीछे BR आगे, इसमें भी F पीछे BR आगे, बट अगर हम इस एक दूसरे को लेके आएंगे, रोटेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर इसको मैंने रोटेट किया बाय दिस वे, राइट, देन F विल कम, F आगे आ जाएगा और BR पीछे हो जाएगा. लेट मी शो यू दैट. एक बार लिख ही देते हैं ना, ताकि पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए, अगर किसी को डाउट है तो. ये हुआ, ये मैंने इस बॉन्ड को, मतलब इस कंपाउंड कैन कन्फर्मर्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ही मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं कंपाउंड को. तो C यहां पे हो गया, मतलब कि H हो जाएगा यहां पे चला जाएगा, और BR हो जाएगा पीछे, और H हो जाएगा आगे. अब देखो, H नहीं, सॉरी, F. अब देखो ये दोनों तो अलग हो गए ना, डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग कंपाउंड. यू सी दैट? एनी डाउट्स? ये बेसिक्स है नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज का मतलब क्या है, ये प्लीज समझ लीजिए. इसलिए मैं एम टेकिंग अ मिनट और टू टू गो ओवर दिस. यस, वी गुड, ऑलराइट, स्वीट. And what is an inactive compound? Something that is superimposable. Look at this nice fork over here. Yeah, I take a mirror and make an image. It doesn't matter. It's like, hey, you know what? I'm symmetrical, bro. Like, what are you talking about? There you go. There you go. Superimposed image. Another example of that. Look at this. ठीक है? ये वाला कंपाउंड है, ये भी है. क्यों? क्योंकि दोनों सेम है. अब नाउ यू सी कि क्यों जरूरी है कि चारों अलग अलग होने चाहिए. उन चार में से अगर दो भी सेम हो गए, तब it will not be superimposed. It will be superimposed. It will be same molecule. I didn't explicitly say this, but अभी हम लोग बात कर रहे हैं. We have switched over from the geometrical isomerism bit to optical activity, and looks like optical activity has to do with a lot with non-double bond places. मतलब हम planar molecules की बात नहीं कर रहे हैं अब, right? We are not talking about planar molecules at this point in time. अभी तक हम लोग बात नहीं कर रहे. खैर, planar molecules are interesting. We'll talk about planar molecules again. अभी basics के लिए we're just starting off with this. All right. Yeah, Ji, I am explaining in English. Yeah, it's like a fine line, right? Hey, English बात करो, हिंदी में बात करो. Yeah, we'll try to make both work. All right. Chiral and achiral. Medha is giving us the next steps that we're going to talk about. Absolutely right. All right. So, for the sake of argument, let me say कि let's rotate this guy this way. If I rotate this guy that way, किस तरफ करना है? नहीं, हमको इस तरफ करना है. Let's rotate this way, right? So H पीछे था, F यहाँ पे है, so F चला जाएगा पीछे और F आ जाएगा आगे इधर, right? And यहाँ पे चला जाएगा हमारा H. Okay. Even in this case, it's the same molecule. दोनों same molecule, आगे पीछे जो भी है, whatever. Cool. Okay, great, awesome. Hence proved, QED and all of that. The ultimate criteria is non-superimposable of mirror image, but other tests can be used that are easier. Okay? What are these other tests? That's what we're going to talk about right now. Two things. One is planar symmetry agar hai, then you will not have, any optical isomers, which means the absence of a plane of symmetry would make something optically active, and an absence of a center of symmetry will also make it active. So, हम लोग अभी detail में जाके we'll understand what exactly is plane of symmetry, what is center of symmetry. Plane of symmetry is easy to understand. Plane मतलब कि plane. Center of symmetry क्या चीज है? थोड़ा सा tricky है, but एक बार आप समझ जाओगे तो you'll never forget it, right? It's that direct. All right, great, cool. I am talking English, my good friend Jia ji. Yeah. That's all right. नहीं आती है. बहुत लोग बहुत बातें languages बात करते हैं. The best thing about India is that we've got a multicultural thing going, right? Anyway, let's go ahead with plane of symmetry. What is plane of symmetry? A plane passing through an object or molecule so that एक तरफ और दूसरे तरफ, on both sides, you get the exact same thing, the exact reflection. Just like that, oh, this is my fork. Yeah, this psi symbol is my fork right now, right? This has a plane of symmetry. If I do this, this is the plane of symmetry. Both दोनों तरफ same चीज दिख रही है. चलो, look at this. If you look at all of these alphabets, you can see where all of these plane of symmetries are drawn. हाथ बाहर चला गया. Apologies, my good friends. So no plane of symmetry here, here. बाकी सब में, in everything else, there is a plane of symmetry. You see that? Any doubts here? Look, some of these have two plane of symmetries. इसमें दो है. I में दो है, J में नहीं है, K में है, L में भी नहीं है. So you see, you can have multiple plane of symmetries also.
Any doubts? Look at this. Aram se, I'll let this lie here for like 10-20 more seconds. Yeah. You guys follow how planar symmetry works? Alphabets mein hum log dekh rahe hain, then we'll go into molecules. Don't worry. It's all right, Aditi. Welcome to the session. We're doing planar symmetry. हम लोग ने नया टॉपिक शुरू किया, so you'll be all right. Yeah. पिछला बात बाद में देख लेना. So now let's look at actual molecules. Which of these will have a planar symmetry? Here आपको बढ़िया सा एक animation दिखेगा of the water molecule that's tetrahedral. How is it tetrahedral? Look at that. It's got 2 hydrogens and it's got a couple of lone pairs. So this is a 3-dimensional molecule. इसमें planar symmetry होगी नहीं होगी? Yes or no? Why PQRST is not symmetry? Biswajit. Okay. Good question. Why PQRST is not symmetry? Can you draw a planar symmetry here? Planar symmetry means draw a mirror. And अगर उसमें mirror के पीछे same चीज दिखी and here then it has. Where do I draw the mirror so that दोनों तरफ same चीज दिखे? Biswajit. It's not possible, right? हर जगह अलग ही दिखेगी. कैसे भी करूं, सीधा करूं, अगर मैं oblique करूं, even if I draw a mirror like this, even if I draw a mirror like that, right? Even then there will be no planar symmetry. Okay, I hope you understand that. There is planar symmetry in previous question. Pallavi. Okay, previous question. कौन सा वाला? अच्छा ये वाला. Z slant. Which way? Oh, like this. Beautiful. Arav. I love that. Yes. So this does have a planar symmetry. Good job. Thank you, Arav. Z has a planar symmetry. I like that eye attention to detail. Do you guys see that? Amazing, amazing. So, no limits, right? You can do whatever you want with this. Right now, that's what organic is good fun. ठीक है. इसमें planar symmetry है कि नहीं है? I think Pallavi was saying yes, there is planar symmetry here. Let's look at it. Let's visualize it, right? I can draw things with my hands, but look at this. See, there is one plane that cuts this right this way. That's the first plane that there is very, very clear planar symmetry. I can have another plane of symmetry this way. Do you see that? Both of these planes are perpendicular to each other. ये दिख रहा है. It's beautiful, isn't it? Arav, I love that, dude. That was amazing. Really good spot. Hats off. बहुत सही किया था आपने. So there are 2 planes of symmetry in the water molecule. ये समझ में आ रहा है? Any doubts here? Yeah? विकास जी, बिस्वजीत जी, all good? एक और लेते हैं. ये तो एक 3-dimensional molecule था. What about a planar molecule like this? BF3. क्या इसमें planar symmetry होगी? अगर होगी तो कितनी होगी? Let's look at it. ये molecule था, इसको किया. I have a feeling कि अच्छा एक तो planar symmetry है ऐसी. But अगर ऐसी एक है तो 2 और हो जाएगी. You will have 2 more, right? So you will have 3 planes of symmetry for sure. एक, 2, and now where's the third one? I think, yeah, there you go. There's the third one. So there are 3 planes of symmetries for sure. And now the fourth one, now this is the most beautiful part. Look at that. Look at that. There's another plane of symmetry. And I was saying this again. इसलिए planar molecule बात नहीं कर रहा था. For a planar molecule, right? The plane in which the molecule lies, that is always a plane of symmetry. है ना? Isn't that beautiful? 3, 4, 3, 4, 3, 4. I love this. I love this. Everyone's very active in the chat. 3 planes of symmetry तो clear दिख रही हैं, but there is a 4th plane of symmetry, right? You see that? Because in this case, this guy also the plane of symmetry. You see that? Yeah? थोड़ा सा ये सबसे this is the easiest way to see it. When you see questions later on, it may be a little bit difficult to see with your eyes. But यहाँ पे समझ में आ गया. अगर यहाँ पे समझ में आ गया, तो आगे के लिए भी ऐसा होगा कि if you have a planar molecule और उसके ऊपर और नीचे दोनों same चीज दिख रही है, then that is the plane of symmetry. That's the definition of plane of symmetry. Okay, cool. All right. अरे दोनों में तो बोल रहे हैं दीपक. सब करेंगे भाई. All right, cool. Look at this. Look at CH4. How many does this have? This happens to have one plane of symmetry this way. And can it have more? That's interesting. Well, you can say that it has 3, but actually it just has 1. Do you see that? मैं बोल सकता हूं कि ये भी है और ये भी है और ये भी है. But since it's CH3, sorry, CH4. Why did I say CH3? CH4. But it turns out, what do you think? इसमें कितने होंगे? इसमें भी 4 बोल. Do you think there are 4? How are there 4 here, guys? CH4 में कितने हैं? सोच के बताओ. I see one plane of symmetry very clearly. But can I, how are you guys saying 4? Explain it to me, please. Sahil, Biswajit, Vikas and Medha. Dipanvita saying 3. Just because मैंने सवाल पूछा 4 कैसे? नहीं. Good job. So at best I can say 3 because that it's not a planar molecule. This is not planar.
तो चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा? वेयर इज द फोर्थ प्लेन ऑफ सिमेट्री गोना कम फ्रॉम? ओके, कूल. व्हाट अबाउट दिस गाय हियर, CH3Cl? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है. तो इसमें भी हम लोग 3 बोल सकते हैं, राइट? एंड गो अहेड विद इट. 3 बोल सकते हैं कि 1 बोल सकते हैं? सोच के बताइए. इज दिस 1 और इज इट 3? ओके ओके, खैर डोंट वरी, नो वंस गोइंग टू आस्क यू नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज. नीट पे नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट. दिस इज जस्ट समथिंग आई एम आस्किंग यू टू थिंक अबाउट. इसके बारे में बाद में और पढ़ लेना. डोंट वरी अबाउट द नंबर, बट देयर डेफिनेटली इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. आई नो मैं थोड़ा नीट के लेवल से ऊपर चला गया, बट छोटी चीज है तो मैंने सोचा बता ही देता हूं. कूल. Hey Pallavi, good to see your responses. Mayuk, Deepanvita and Sahil as well. Okay, CH2Cl2, इसमें भी definitely plane of symmetry है. तो this is kind of proving a point, right? कि अगर if there is a repeat of a couple of species, there is possible to have a plane of symmetry. चलो इतना theory हो गया. अब एक और बहुत interesting example देखते हैं. What about this? क्या इसमें plane of symmetry होगी? 1,2-dichlorocyclopropane. 1,2-dichloro साइक्लोप्रोपेन. इसमें वो साहिल, विकास एंड तनु सेइंग 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री. कैसे भाई 1 सिर्फ? कहां होगी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री? Where will this plane of symmetry be? It'll cut this molecule exactly into half. You see that? And because ये दोनों, look at this hydrogen, right? This plane of symmetry exists because इस तरफ और इस तरफ सेम चीजें हैं. मिरर, प्लेन ऑफ सिमेट्री को मिरर की तरह ही आप लोग समझ लो. यस साहिल, इन द प्रीवियस वन. या साहिल, टेल मी. दीपू सेइंग 3 कैसे हो गए दीपू? एक ही होगा ना? विश्वजीत ऑल्सो. हाउ आर यू गाइस सेइंग 3? आई एम नॉट एबल टू सी द अदर 2. एक तो ये हो गया. एनीवेयर एल्स इफ आई ड्रॉ द प्लेन ना, इट विल नॉट कट दीज 2 हाइड्रोजन्स एंड हेंस एक ही होगा. ओके, अगेन ये नीट के लेवल के ऊपर है. इट्स नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन नीट, बट सिंस हम लोग वी आर हैविंग फन, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, ट्राई एंड सी इट. देयर इज जस्ट 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मिरर. तो अगर मैं मिरर को कहीं भी बीच में मॉलिक्यूल में रख दूं तो दोनों तरफ मॉलिक्यूल के सेम चीज दिखनी चाहिए. मतलब मिरर के अंदर सेम और पीछे भी यही सेम चीज. ठीक है, सोचने का तरीका है. चलो अब 1-2 सवाल करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? इन दोनों में से कौन सा होगा? रिमेंबर YY NY YY NN, वही आपको डालना है चैट पे, जस्ट लाइक लास्ट टाइम. व्हाट डू यू थिंक? अपने ओपिनियंस बताइए. ओपिनियंस नहीं, मतलब आंसर बताइए. I don't know why I said opinions. Funny thing to say. Okay, NY, Tanu for NY, Deepanvita for YN, Tanu for YN. No, change her answer. ठीक है, मेधा for YN, विश्वजीत for NY. दोस्तों अरे can I say something? ठीक है, चैट में डालते जाइए. बट ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है, दे विल ऑलवेज बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, विच इज व्हाट? द प्लेन ऑफ पेपर इटसेल्फ. तो इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना, है ना? लॉर्ड वेडर, लुक एट दैट एंट्री. लुक एट दैट एंट्री. आई एम एक्सप्लेनिंग इंग्लिश ब्रो. और कितनी इंग्लिश बोलूं मैं? या फनी, आई सेड दैट वन इन हिंदी. वेडर, good job bro. What an entry, right? He goes and says why the noodles. You guys get why? दोनों में है, right? It's a planar molecule, यानी कि the plane of paper, that is your plane of symmetry. How do you remember this? मैंने बोला था कि BF3 में it was easy to understand that boss, there's a plane of symmetry which is this itself. And also in that other one, let me go back quickly. ये देखो, this one also we did the same thing कि this is not plane of paper, but ये दोनों molecule को cut कर रहा है, and both sides you get the same thing. You want me to go back to that one? Paper, plane of paper वाला चीज. देखो ये कहाँ गया? BF3. There you go, BF3. इसमें 4 थे, not 3. Yeah, that's why I said that, boss, be careful. When you have a planar molecule, then yes, plane of symmetry will be there. Okay? Now you see it. Good job. Good job. All right. So the answer is this. Okay, let me use a green thing here. This is your answer. That is, both of them have a plane of symmetry. Okay, awesome. So this one is very special. Okay, हम लोग we'll revisit this. We'll revisit this molecule फिर से एक बार in just a couple of minutes.
There's something called a center of symmetry. अब center of symmetry क्या होता है? Plane of symmetry हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बट देयर आर अदर केसेस वेयर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बट फिर भी इनएक्टिव हो जाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बट इवन देन इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव. नाउ व्हाट इज दैट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन विद दिस आइडिया ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री. कूल. ओके, ऑसम. होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट थिंक दिस वन थ्रू. CH3, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इस वाले में? A lot of you said y. No, a lot of you said, let me just scroll up to the, a lot of you said y and n. I think the consensus was that it was y and n, कि इसमें plane of symmetry नहीं है. Why did you guys say that? Just quickly checking it. Can you just walk me through it? I don't want to dismiss anything, right? मैंने बहुत confidently बोल दिया कि plane of symmetry होती है, हो सकता है ना हो इसमें, because CH3 is a, you know, it's a molecule that has this is three-dimensional, right? So plane of symmetry होगी नहीं होगी? Not forming a plane. तो इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं तो हो सकता है एक हो सकता है H, नीचे हो सकता है, yeah, due to 3D structure of CH3. It's okay. So इसमें plane of symmetry है कि नहीं, एक बार सोच के बताओ. मैंने बोल दिया, आप लोगों ने सब बोला कि yes, yes, yes. But do you guys agree with me or do you not? Look, you don't have to always agree with what I say, okay? You can disagree with me as well. It'll be good to have a discussion if you say कि नहीं ये तो भाई, I don't think it has a plane of symmetry. What do you think? What do you guys think? Just checking the chat quickly. Hold on. कहाँ गया chat? No, I guess. No, I guess मत करो ना, थोड़ा सोच के बताओ. सोच के बताओ. See, the deal is that it is, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला तो आप लोगों ने मान लिया कि हाँ इसमें होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? बट थिंक अबाउट इट लाइक दिस. आई थिंक वन ऑफ यू गाइज सेड इट. इसके ऊपर व्हाट्स हिज गाइज नेम? ऊपर somebody said something about 3D. Yeah, Mayuk said due to 3D structure of CH3 होगा नहीं होगा, we are not so sure. We are not so sure. Okay, so I am going to say, I'm going to change my answer to y and n, what all of you were saying, because plane of symmetry नहीं दिख रही है. If these were planar, maybe अगर ये दोनों not CH3 होते, if both of these were say F, then I would say कि yeah, plane of symmetry है. But since it's not F, it's CH3, I'm not sure. I am feeling कि इसमें plane of symmetry नहीं होगी. But even then, this is optically inactive, and that's what we use center of symmetry to teach. Yeah, exactly, Medha. Good job. It's okay, Biswajit ji. It's all right. Sorry to cheat you. And बहुत confidently मैंने बोला, सब लोग मान भी गए. ठीक है. But it's all right. Please stay active, and it'll be good to see you disagree with me, because I'm going to do this often. ठीक है. Now, what is center of symmetry? Center of symmetry is a point with an object or a compound, so that if you draw a straight line from any point or element of the object to the center and extend it in equal, अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, इसको समझते हैं. Let's read it one by one. Center of symmetry is a point with an object or a compound. So let's say this is my amazingly drawn oval shape. ठीक है. Let's say this point here is my center theoretically. Okay, object compound says straight line drawn from any part of the element of the object to the center and extended to an equal distance on the other side encounters an equal part of the element. अच्छा, मतलब मैं एक तरफ जाऊं इतना डिस्टेंस और अगर ऑपोजिट साइड पे जाऊं सेम डिस्टेंस, आई विल मीट अ सेम पॉइंट. अच्छा, ये तो हो रहा है. लुक एट दिस. आई एम यूजिंग वट एवर कलर आई वॉन्ट. इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, मुझे सेम चीज मिल रही है. If that happens, then I say that that object is supposed to be symmetrical. ये थोड़ा मैथ्स में maybe you will study about symmetry and all of that, but ये mathematical concept है जो हम लोग apply कर रहे हैं. So for example, in this sort of a thing, this does have a center of symmetry. It may initially look like कि अरे ये कैसे हो सकता है, but देखो दोनों तरफ extend करने पे same चीज मिल रही है. You're getting the same thing if you extend it both ways. In this as well, that happens. Now that is in a 2D thing. I can extend the same thing to a 3-dimensional idea. Okay. Look at this. You've got this nice cube over here. Even in this cube, if I put this point as the center and I extend it into all the 3-dimensional ways, you see
सेम डिस्टेंस पे इफ आई गो आई गेट द सेम ऑब्जेक्ट ऑन बोथ साइड्स. सो नाउ मैं एक सेंटर ऑफ सिमेट्री से लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं एंड बोथ ऑफ दोज लाइंस गेट द सेम थिंग ऑन बोथ साइड्स. दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ सिमेट्री इज. एनी डाउट हियर? Prefix name of thioalcohol. Okay. What do you mean, bro? Go look it up on the internet. We are talking about stereochemistry. Focus. Okay. I'm here to answer any question related to this. Anything else? Please get in touch with me on IT Scam on Telegram or figure it out. Yeah. ठीक है. All right. Cool. So center of symmetry का ये idea है. Look at this. The easiest thing to understand is a circle, right? A circle, the center of the circle is obviously center of symmetry. क्यों? Look at this, because equidistant from all points and all that. इसी को locus बोलते हैं, right? You've studied this in maths. I know a lot of you don't like maths, so I will not talk about maths so much. But this is a small mathematical idea. ठीक है? अब देखो भाई, same. Let's get those same alphabets. Can you identify? Just take a minute to identify which of these will have a center of symmetry. Hey Tanmoy, what's up? Hi. Which of these will have a center of symmetry? Which of these amazing alphabets? सोच के बताओ. I agreed with Arav very nicely. Hey, Nanpreet, what's up? Medha, O. Okay. O has a center of symmetry. Good job. I agreed with Arav very confidently last time, but I don't think this has a plane of symmetry. Now, if I had a plane of symmetry, then Z ka hota ye, then this would, the Z alphabet would be this, no? It would not be this. So Z does not have, क्या बोलते हैं उसको? POS. Arav, मैंने आपकी बात मान भी ली थी उस समय. लेट मी जस्ट क्लियर द नोट्स ऑन द लास्ट टाइम ऑल्सो. एक मिनट, तब तक आप इसको आंसर दीजिए. इसको मैं इरेज कर देता हूं. नो POS यहां पे भी. ठीक है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है. Z में आई एम गिविंग यू बिट ऑफ अ हिंट. Z में सेंटर ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली है, हो नहीं सकती है. देखो, इफ आई गो फ्रॉम हियर टू हियर आई गेट द सेम थिंग. इफ आई गो फ्रॉम हियर टू हियर आई गेट द सेम थिंग. तो Z इज वन हिंट आई हैव गिवन यू. एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही होता है. सेंटर मतलब वन. ओके, O is one. ओके, उसके बाद किसने बोला I2. ओके, I is one. ठीक है, I will take your word for it. I'm not saying yes or no, मैं बस सब लिख रहा हूं जो भी आप लोग बोल रहे हैं. H. ओके, IOX. X कहां गया? X. ओके, और क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? Q कैसे हुआ विश्वजीत? ठीक है, I will write it right now. आप बोल रहे हैं तो मैं लिख देता हूं. QOHIS. दीपान्विता striking gold with S. अभी तक किसी ने S नहीं बोला था. I'm inclined to put this on S and say yes, good job. So right now, so far, we have Z. Let me use a different color. इसमें दिख नहीं रहा होगा. Arav, if you are around, do you understand why इसमें center of plane of symmetry नहीं है? I hope you follow that. So what do we have? We have H, we have I, we have O, we have S, we have X, we have Z, यानी कि Z. और कोई है? कोई मिस हुआ? N. मेधा. Look at that, मेधा. लवली, गुड जॉब मेधा. एन में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है. देखो, इस तरफ जाओ, 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 सेम चीज मिलती है. दैट्स इट. विद दैट वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल ऑफ देम दैट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री. ऑसम. ठीक है, ऑल ऑफ दीज ब्यूटीफुल. सो यू अंडरस्टूड दिस. दिस क्वीन ऑफ हार्ट्स आल्सो हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री है राइट इन द सेंटर ओवर हियर, राइट? नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. POS. Yes. COS. Yes. What about this? Such a fancy, complicated compound. Looks like यार ये तो optically active होगा ही, होगा ही, but नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं होगा. It will be here, right? Look at this. दोनों तरफ सेम, इस तरफ सेम, इस डायरेक्शन में सेम. ध्यान से देखो, COH ऊपर, COH नीचे, तभी ये काम करेगा. ओके, H इधर, H इधर. So COS, yes. Okay? No POS, for sure. Mayuk, no POS. Absolutely right. ठीक है, मजेदार सेशन. अगले सेशन में हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री को और डिटेल में देखेंगे. ओके, एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट दिस मॉलिक्यूल इज स्पेशल. एक सेकंड में इसको बात कर लेते हैं. दिस गाय राइट हियर, राइट? इसमें दूसरा कलर यूज करते हैं ताकि जो दोस्त हम लोग का ये टेलीग्राम में देखेंगे विद दिस PDF, they understand that there's something else. इसमें center of symmetry, yes. देखो, this way. And because of that,
because of that, it has very, very strong melting point and all of that higher is because of this idea of symmetry. तो इनको हम लोग broadly operation symmetry operations बोलते हैं, right? There are some rotational symmetry और भी बहुत चीजें हैं. तो anything that has more symmetry operations is more stable. Okay? The molecule itself, structurally speaking. तो इसलिए उसका melting point high हो सकता है. एक quick homework question आपको देता हूं, then we'll wrap the session up. Okay? All right. Good job, Mayuk. Absolutely. Here's a question. थोड़ा सिंपल वाला सवाल है होमवर्क में. टेक इट आउट. एंड इन द लास्ट सेशन विच विल बी, आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे को हम लोग करेंगे, we'll wrap this up and we'll start, I think we're going to start equilibrium. Yeah, we're going to start equilibrium on Saturday. कल हम लोग मिलेंगे PYQs के लिए 8:30. So quick summary of everything we've done so far. Optical isomers are those that have a different behavior towards plane polarized light, right? And plane polarized light is after passing Nicol prism, it has oscillation in just one plane. अगर वो right hand side या फिर clockwise को करे rotate, then that's called dextro-rotatory. Left is levo-rotatory, and that's given by small d and plus, या फिर small l and minus, yeah. And something that does not move the plane of polarization, that is going to be optically inactive. Small d plus, small l minus. All right. And the main thing is that this is experimental. You cannot predict it just by looking at the structure. Optical activity was figured out by something called, which we'll look at in the next session in detail. We'll look at all about diastereomers, mesomers, all of that, enantiomers, वो हम लोग करेंगे chiral molecule के बारे में. Asymmetrical molecule की हमने इस सेशन में बात की, yeah, non superimposed mirror image. But superimposed mirror image कितना बनाते जाओगे? It's better to look at two things called planar symmetry and centrosymmetry. अगर planar symmetry और centrosymmetry है, then the molecule is optically inactive. अगर नहीं है, then it will be active. Okay, that's it. That's it for me from now. Plane has to do with looking just like a mirror. और अगर planar molecule है, then there will be a centrosymmetry. But be careful, ध्यान से इसको check करो, ठीक है? Centrosymmetry मतलब कि दोनों तरफ एक लाइन एक्सटेंड करो, अगर सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है तब centrosymmetry होगा. Then you will have a center of symmetry. Here is the example of center of symmetry. That is it from me for now. सब लोग थैंक यू ऑलरेडी बोल चुके हैं, जा चुके हैं. चलो 7:15 में एक और सेशन है क्या हम लोग का? Anyway, have fun. Chemical bonding. Okay. Good stuff, guys. I'll see you around. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ऑर्गेनिक करने में. I hope आप लोगों को भी मजा आ रहा है. Do share this video with your friends if you liked it. And yeah, since you're all chatting, you have subscribed to it. Tell your friends to subscribe to our channel as well. All right. I'll see you around. Bye.